Good morning, my dear students. Today we are going to learn a new concept related to the chapter that is called permutation and combinations. So in this chapter there are two parts, one is permutation, another is what? Combinations. Regarding the permutations, we are going to learn a particular new concept and new that is called introduction of a symbol, okay? And how we are going to solve the questions by using this particular new symbol, okay? So let us discuss about this symbol. First we let us see in your on your screen what is the particular new concept that is called theorem, okay? The number of permutations of n different objects taken are at a time, where 0 less than or less than equal than n, and the objects do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 n minus r plus 1, which is denoted by the symbol NPR. The symbol is written stated like that, NPR. So NPR equal to what? N into n minus 1 into n minus 2 n minus r plus 1. That particular that is relation you are going to prove it. how this particular ये जो NPR है वो n into n minus 1 n minus 2 n minus r plus 1 है, उसको कैसे प्रूफ करना है. This is the new introduction, new that is particular notation NPR. तो उसको कहते हैं n symbolized as NPR and written as NPR, and which is equal to what? N into n minus 1 into n minus 2 n minus r plus 1. So before going to solve the particular derivation, let us take an example first. Suppose that we already discussed about fundamental principle of what? Counting, and here we have given some real life examples, like suppose how many ways can 5 boys can sit in a 4 seats. That example I am going to take again. So there are 4 seats for 5 boys, there are 4 seats available, okay. 4 seats available for 5 boys. So they are the 5 boys, okay. All the boys are what? Different. All the boys are distinct. Alag alag hai. And this particular, we already proved that this particular fill up, if the repetition is not allowed, then this particular is fill up by what? 5 ways, and it can be fill up by then 4 ways, then it can be fill up by 3 ways, and it can be fill up by what? 2 ways, okay. So this 5 distinct boys can be placed in 4 different places, and this actually symbolized as what? 5p4. As our notation we have denoted NPR, that means n distinct object can be placed in R place. R place में कैसे आप उसको क्या करेंगे? Arrangement करेंगे. Likewise 5p4 means what? 5 boys can be placed in 4 places. How many ways 5 boys can be arranged in 4 places? This is the symbol, and which equal to what? 5 into 4 into 3 into 2 by fundamental principle of counting, okay. So 5 into 4 can be written as 5 minus 1, and then 3 can be written as 5 minus 2, and 2 can be written as 5 minus 3. Can I write this? Okay. So this way we can arrange this. This is 5, then 5 minus 1, then 5 minus 2, then 5 minus 3. Okay. Last term can be written as then 5 into 5 minus 1 into 5 minus 2 final answer can be written as 5 minus 4 plus 1. Can I write this? Final term can be 5 minus 4 is equal to what? 1 plus 1 equal to 2, and 5 minus 3 equal to also 2. So this particular expression, last जो term है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. We can write 5 minus 4 plus 1, that is 5p4. Okay, understood? Now how to evaluate NPR? Okay, that means n different objects can be placed in R place. What is the condition? R greater than 0
एन लेस देन इक्वल देन व्हाट एन, आर मैक्सिमम क्या हो सकता है, एन हो सकता है, आर विल बी व्हाट मैक्सिमम व्हाट एन, अदरवाइज इट इज़ लेस देन एन। सो ये जो आर है एन से बड़ा नहीं हो सकता। सपोज एन इक्वल टू 5 एंड आर इक्वल टू 6, इट इज़ नॉट पॉसिबल, 5p6 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैक्सिमम आर का वैल्यू क्या हो सकता है, एन हो सकता है। सपोज दिस इज़ 5, दिस विल बी मे बी 5, ओके, इट कैन नॉट बी 6 और इट मे बी लेस देन 5, ओके। सो दिस इज़ द कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर, ओके, आप लोगों को समझना ज़रूरी है। नाउ एंड देयर आर हाउ मेनी प्लेसेस, योर प्लेस इज़ व्हाट, दिस इज़ फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस and this is third place and dot dot dot, this is rth place, first, second, third and rth place. And in all these places, how many numbers, how many distinct objects, these are n objects, all are distinct, all are what, distinct means what, alag alag, ठीक है। all distinct object can be placed in r place in how many ways, by fundamental principle of counting। पहले क्या होगा, फर्स्ट n ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस इन फर्स्ट प्लेस इन हाउ मेनी वेज, n वेज, ओके। n ऑब्जेक्ट्स है तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप पुट कर सकते हो और नंबर ऑफ वेज क्या होगा, n होगा। वन ऑब्जेक्ट प्लॉट करने के बाद हमें कितना ऑब्जेक्ट रह जाएगी, विल रिमेन n माइनस वन ऑब्जेक्ट, ओके। हमें कितना ऑब्जेक्ट रह जाएगा, n माइनस वन रह जाएगा। n माइनस वन से आप बाकी सेकेंड प्लेस को how many ways you can fill up, you can fill up by n minus 1 ways, okay। तो आप फिर और एक ऑब्जेक्ट आपने प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद आप रिपीट नहीं कर सकते, देयर इज ए नियर थ्योरम इट इज स्टेट दैट नो रिपीटिशन इज अलाउड। देन व्हाट हैपन, वहाँ से फिर एक माइनस करो तो क्या होगा, n माइनस 2 होगा, ठीक है। तो n माइनस 2 विल बी रिमेनिंग एंड थर्ड प्लेस विल बी फिल अप बाय व्हाट, n माइनस 2। ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट इज द लास्ट प्लेस, यू हैव टू इमेजिन थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस में क्या हो रहा है, n माइनस 2, हमें उसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, n माइनस 3 प्लस 1, कैन आई राइट दिस, व्हेन प्लेस इज थर्ड इट कैन बी n माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, n माइनस 2। व्हेन प्लेस इज व्हाट 2, दिस n minus 1 can be written as what, n minus 2 plus 1। place is 2, then you write 2, place is 3, then you write minus 3 plus 1, then minus 2 plus 1। then if the place is r, then what will be the result here, n minus place is what, r plus 1। सेम पैटर्न से मैंने लिखा है, दिस पैटर्न और दिस पैटर्न, ओके। दोनों ये जो पैटर्न हमें निकाला है, इस पैटर्न के साथ उसको लिखा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट प्लेस इज फिल अप बाय n because there are n different objects, so first place can be filled up by any one of the n different objects। then second place is filled up by n minus 1। why n minus 1? because after plotting one particular object there will be n minus 1 object remaining, और वहाँ से n minus 1 object से आप इस place को n minus ways से आप fill up कर सकते हो। so similarly third will be n minus 2 because फिर वहाँ से और एक कम होगा, रिड्यूस होगा, some particular object will be plot here। प्लॉट करने के बाद हमें क्या रहेगा, n माइनस 2 रहेगा। सो n माइनस 2 ऑब्जेक्ट से आप थर्ड प्लेस को इसे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये n माइनस 2 हो या n माइनस हो, इसको हम इस अरेंजमेंट के साथ लिख सकता हूँ। दैट्स वाई व्हेन थर्ड प्लेस इज फिल अप देन n माइनस 3 प्लस 1, व्हेन सेकेंड प्लेस इज फिल अप n माइनस 2 प्लस 1, व्हेन rth प्लेस इज फिल अप n माइनस r प्लस 1, है कि नहीं। सो इन हाउ मेनी वेज these all the r places can be fill up because this is a particular event। ये event ख़त्म होने के बाद ये event शुरू हुआ, then this event, then in this way all the event happen। fundamental principle of counting tell us, हमें क्या कहते हैं, your total arrangement will be multiplication of all the events, this one into this one into this one into this one, okay, सब multiply कर देंगे, ठीक है। so number of arrangement will be, what will be the number of arrangement? number of arrangement will be n into n minus 1 into what, n minus 2 dot 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 n minus r plus 1, ठीक है, n minus r plus 1। and this particular result is denoted by a symbol, it is symbolized as npr। you can read like that, that is
n different object can be placed in R place, or n different objects taken R at a time. Many ways you can read. N different object can be placed in R place, or you can say n different object taken R at a time. Okay, is equal to what? N into n minus 1, n minus 2, dot 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 n minus R plus 1. This is your final result. Okay, so this all these things is not required to write. You have to just remember this. Okay, you have to remember this. Why this? I just explain it. Okay, I have given a real life example first, and from here I just generalize the thing. Okay, मैंने एक जनरलाइज रिजल्ट दिया, एंड इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिस्टिंक्ट होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट. एन ऑब्जेक्ट व्हाट? डिस्टिंक्ट होना चाहिए. अगर ठीक है, देन व्हाट हैपन? कंडीशन इज व्हाट? आर जीरो लेस देन आर लेस देन इक्वल देन. ये दो कंडीशन है, नंबर 1 and 2. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना होगा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन. आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? एन होगा. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ इफ दिस एन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, इफ दिस एन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, व्हाट विल हैपन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So there are suppose R places, place number 1, place number 2, place number 3 and dot 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 place number R. ठीक है, first, second, third and R. Rth place. Okay. Suppose that this n distinct n objects are not distinct. Are distinct. Suppose n objects are distinct. I'm sorry. Are distinct. Okay, this condition is satisfied. Distinct. And suppose that repetition is allowed. R-E-P-T-I-T-I-O-N. Okay, repetition is what? Allowed. ठीक है, इसमें क्या है? Suppose if you take an example that there are n person, there are what? N persons. एंड देयर आर आर प्लेस. ओके, आपको एन पर्सन को आर प्लेस में क्या करना है? प्लॉट करना है. और इसमें क्या है? रिपीटिशन इज अलाउड. रिपीटिशन इज अलाउड मीन्स व्हाट? कोई भी पर्सन फर्स्ट प्लेस में बैठेगा, वो फिर क्या होगा? रिप्लेस होकर दूसरी प्लेस में बैठ सकता है. रिपीटिशन इज व्हाट? अलाउड. सो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होगा? फर्स्ट प्लेस इज फिल अप बाय हाउ मेनी वेज? एन वेज. ओके, ये तो है n persons is there. Then after filling up the particular place by one person, तो हमें कितना पर्सन रहेगा? n-1 रहेगा कि नहीं? Since this person, ये जो पर्सन इधर प्लेस किया गया है, this person is what? This person is again क्या होगा? ये again क्या होगा? रिप्लेस हो सकता है, दूसरी जगह में बैठ सकता है, रिपीट कर सकता है. तो ये वन पर्सन आके फिर जो रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस के साथ ऐड हो सकता है. ऐड होने के बाद हमें कितना रहेगा? फिर एन हो जाएगी. तो सेकेंड प्लेस इज फिल अप बाय व्हाट? एन. देन थर्ड प्लेस विल बी फिल अप बाय, एक्चुअली क्या होना चाहिए था? n-2 होना चाहिए था, लेकिन n-2 नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी इधर प्लेस होगा फिर इसमें बैठ सकता है. कंडीशन हुआ, फिर क्या होगा? टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा. सो इट विल बी अगेन एन. डॉट 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 डॉट. लास्ट प्लेस इज ऑल्सो बाय व्हाट? एन. So it means every place can be filled up by n number of ways. n number of ways. समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. So by fundamental principle of counting, n into n into n into dot 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 n, how many times? R times. कितने बार मल्टीप्लाई करो? 1 2 3 up to how many times? R times. आपको पता है, सपोज इफ आई से 2 into 2 into 2, how many times you multiplied? 3 times. Okay, it can be written as what? 2 cube. So if n is multiplied by r times, it can be written as what? N to the power r. N to the power what? R. Okay, I hope you understand. So this is called what? This is called what? Permutation. This is called what? Permutation of n different objects placed in r place
okay, arranged in R place when the repetition is allowed. When the repetition is allowed. For example, suppose there are 3 seats. Okay, there are 3 seats. Understood? Or you can say there are 3 places. Okay, you have a digit 1, 2, 3, 4, 5. Okay, using this 5 digit, how many numbers of 3 digit number? There are 3 places, so 3 digit number can be formed using these digits when repetition is allowed. So first place can be filled up by 5 ways, second place can be filled up by 5 ways, third can be filled up by 5. So this is called what? 5 to the power 3. Okay, understood? So in this way, this is the application, this is the basic formula, and formula is what? N to the power r. Okay, number of digit is what? N is equal to 5, number of place is what? 3. So formula is what? N to the power r, 5 cube. Okay, you can use this. Okay, so I hope you understand. This is particular a derivation of previous formula. प्रीवियस जो रिजल्ट है, प्रीवियस जो थ्योरम है, उस थ्योरम का एक डेराइवेशन है अगर क्या है? रिपीटिशन अलाउड हो। रिपीटिशन तो अलाउड नहीं होगा तो क्या फॉर्मूला है? NPR। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो NPR, एंड रिपीटिशन अलाउड होगा तो N to the power R, एंड NPR का रिजल्ट क्या है? N into N minus 1 dot N minus R plus 1। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, दिस आर द बेसिक आइडिया आई वांट टू शेयर विथ यू. And I have discussed, and I believe that you can understand. So there is nothing very difficulties are there. Just I have take a few real life examples and try to inculcate the concept in you. Okay. Now we are going to learn about new notations that is called factorial. What is this particular concept we are going to understand? Okay, factorial notations. What is factorial notations? It is the product of first n natural number. First n natural number. There are natural numbers started from what? 1. So up to n natural number. Suppose 1, 2, 3 dot up to n. There are n natural number, and if you take the product of these n natural number, और कहाँ से शुरू होगा? It will be start from what? 1. So from first natural number to n natural numbers, what is the product? If this particular product, ये जो product है, this particular product is denoted by a symbol called n factorial. It is written as n factorial or factorial n. Both are same meaning. Some books it is the symbol, some book it is the symbol. Okay, so both the symbol are same. It is called n factorial or it is called factorial n. Okay, and this n factorial or factorial n is equal to what? 1 into 2 into 3 up to dot what? N. Or you can write in reverse order. So n से n का प्रीवियस नंबर क्या होगा? n minus 1 होगा. इसका प्रीवियस नंबर क्या होगा? n minus 2 होगा. So in reverse order you write n into n minus 1 into n minus 2 into dot 3 2 1. फाइनली कहाँ ख़त्म होगा? 1 में जाके ख़त्म होगा. For example, suppose that if I want to find factorial 6. Factorial 6 means what? You can write 6 into 5 into 4. क्या होगा? n then n minus 1. Okay, into what? 3 into 2 into 1. Finally 1 into 2 into 3 4 5 6. Factorial 6 means what? Product of first 6 natural numbers. First 6 natural number. Okay, you can write like this. From this result, one thing you see very important. What is this? ये क्या होगा? कोई बताएगा? This will be 6 into product of first 5 natural number. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 or 5 4 3 2 1. तो ये क्या होगा? It will be factorial 5. It will be what? Factorial 5. Understood? So from here we can see 6 factorial is equal to 6 into factorial 5. 6 अगर बाहर किया जाए फैक्टोरियल से तो अंदर क्या हो जाता है? 5 फैक्टोरियल हो जाती है. तो फ्रॉम दिस रिलेशन इस पर्टिकुलर दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज व्हाट? n factorial. So from here from 1 to n minus 1, what will be the result? From 1 to n minus 1, it will be what? See, check. It will be what? This is n.
into what? 1, 2, 3 up to what? N minus 1, meaning product of first n minus 1 natural number. So it can be written as what? N minus 1 factorial. N minus 1 factorial. तो अगर n ये इनिशियली क्या था? दिस इज n फैक्टोरियल. अगर n को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या होगा? n माइनस 1 होगा. फिर n माइनस 1 को बाहर करेंगे, अंदर में क्या होगा? n माइनस 2 होगा. फिर n माइनस 2 को बाहर करें, अंदर में क्या होगा? n माइनस 3 होगा. इन दिस वे प्रोसेस इज गोइंग ऑन, n इंटू n माइनस 1. तो अंदर में क्या होगा? n माइनस 1 बाहर कर दिया, फिर 1 रिड्यूस होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल. देन यू कैन से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. n माइनस 2 बाहर कर दिया तो अंदर क्या होगा? n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. फाइनली जाके क्या होगा? कहाँ ख़त्म होगा? 1 में जाके क्या होगा? ख़त्म हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस. सॉल्व जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सारे रिजल्ट हम यूज़ करेंगे. प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस थिंग. ओके, एंड इन प्रीवियस आई हैव ऑलरेडी discuss about NPR. What is NPR? Permutation. NPR means what? NPR means what? Permutation of n different objects taking r at a time, or you can say that n different object can be placed in r places. Okay, understood? तो उसके साथ इसका एक रिलेशन हम बनाएंगे अभी. फैक्टोरियल और NPR के साथ रिलेशन बनेगा. ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन NPR एंड NPR का एक फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग दिस व्हाट? फैक्टोरियल. ठीक है, फैक्टोरियल के साथ जुड़ के एक फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे. वी नो दैट NPR इज इक्वल टू व्हाट? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, एंड दिस इज कॉल्ड permutation of n different objects taking r at a time. So you read this particular statement like that: permutation of n different objects taking r at a time. Now if r का maximum value क्या हो सकता है? n हो सकता है. ठीक है नहीं? So if r is equal to n, then what will happen? If r is equal to n, you can write npn. Understood? So npn means what? What is actually its mean? N different objects taking n at a time. सो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, हमारे पास है, और हम क्या करेंगे? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टेकिंग ऑल एट ए टाइम. n क्या है? हम क्या कह सकते हैं यार? व्हाट इज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन आर एट ए टाइम. n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन ऑल एट ए टाइम. सो इट इज स्टेट लाइक दैट. फाइनली लिख लेंगे हम. ठीक है. सो NPN इज इक्वल टू, बाई फॉर्मूला में पुट करो, क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2. सिर्फ r की जगह में क्या होगा? n होगा. फाइनली क्या हो जाएगी? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 वाट. फाइनल लास्ट नंबर क्या होगा? 1 होगा. लास्ट नंबर के पहले क्या हो सकता है? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट. इफ इट इज़ 1, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रीवियस टर्म? इट विल बी 2. इट विल बी व्हाट? 3. अंडरस्टूड? ऐसा होगा. लास्ट टर्म इज व्हाट? 1. and it is nothing but 1 into 2 into 3 dot dot dot. finally कितना है? n है. it is the product of first n natural number, so it can be written as what? Factorial n, or you can write factorial this. okay, so product of first n natural number. n natural number से 1 से शुरू हो गया n तक जितना नेचुरल नंबर है सबका प्रोडक्ट है, और ये सबका प्रोडक्ट का नाम क्या है? फैक्टोरियल n. ओके, और n फैक्टोरियल, you can say. So NPN is equal to, finally NPN is equal to what? Result is what? Factorial n, and it is written as n different objects taking all at a time. N different objects taking all at a time. Okay, so this is the particular statement, very very important. Okay, or you can say, so is this NPN, ये सारी चीज़ क्या है? arrangement है, because I already told you that permutation is nothing but what? arrangement. Okay, so you can say that n different things can be arranged among themselves. n different thing can be arranged among themselves. ये statement फिर लिखो. n different objects can be arranged
arranged, okay, among themselves. And different objects can be arranged among themselves is equal to what? Factorial n. So if I say n different objects can be arranged among themselves, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Factorial n. If I say there are 5 books, very very important, take a real life example. So there are 5 books, okay, there are what? 5 books. Now if I ask question, how many ways 5 books can be arranged among themselves, or you can say arrange 5 books. तो 5 books को arrange करना है, how many ways you can arrange 5 books? The question is that how many ways you can arrange 5 books. तो 5 books के लिए कितना place होगा? 5 place होगा. Definitely there are 5 books, so for them what happen, there will be a 5 place. So we can place, suppose this is book number 1 2 3 4 5, okay, so this is one arrangement, this is one arrangement. If I reshuffling the books, okay, फिर क्या अरेंजमेंट क्या हो सकता है? 2 1 3 4 5 4 3 2 1, ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा, ठीक है. ये सारी अरेंजमेंट को क्या है, सारी अरेंजमेंट में क्या है? 5 बुक्स है और कितना प्लेस है? 5 प्लेस है. 5 बुक्स कैन बी प्लेस इन 5 प्लेस, व्हिच कैन बी रिटन एज व्हाट? 5 बुक्स कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स, क्योंकि उन बुक्स के बीच क्या हो रहा है? अरेंजमेंट हो रहा है. उन बुक की बीच में क्या हो रहा है? अरेंजमेंट हो रहा है. इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, फिर अरेंज कर रहा हूँ अमॉन्ग देमसेल्व्स. सो अब ये जो बुक्स है उनके बीच क्या हो रहा है? अरेंजमेंट हो रहा है. दैट्स वाई आई हैव रिटन द स्टेटमेंट अमॉन्ग देमसेल्व्स, ओके. 5 बुक्स कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है, ऑल द डिफरेंट बुक्स, ओके. So this particular 5 books can be arranged among themselves is written as what? 5p5, and इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल 5. इसका रिजल्ट क्या होगा? फैक्टोरियल 5. एंड फैक्टोरियल 5 क्या है? फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू व्हाट? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, okay. So you can get the answer like that, ठीक है. So how to apply this particular formula in questions? That's I have given a particular examples, okay. जब आप क्वेश्चन आएंगे, जैसे there are 5 boys or there are 10 boys, how many ways 10 boys can be arranged among themselves? तो 10 बॉय के लिए कितना प्लेस होगा? 10 प्लेस होना चाहिए. तो फैक्टोरियल 10 is the answer. Answer is what? Factorial 10. So this is a very interesting results, NPN. So NPN is equal to what? I ultimately get factorial n. What is NPN? The n different object taking n at a time, or you can say n different object can be arranged among themselves. That is what the statement. So this type of language, ये language आपको questions में जब आंसर करेंगे उस टाइप ऑफ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इसीलिए आई हैव मेंशन इट. सो आप ये सारे चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेशन ऑफ व्हाट? डेरिवेशन ऑफ व्हाट? NPR in terms of what? Factorial. In terms of what? Factorial, okay. So what is NPR? NPR equal to what? N into n minus 1 into n minus 2 dot what? N minus r plus 1. So every time you see first n, then next term, how you get the next term? By reducing 1. क्योंकि n अगर 5 होगा तो ये 4 होगा, 1 रिड्यूस हो रहा है, देन ये क्या होगा? 3 होगा, ऐसा होगा. सो इन एवरी टाइम क्या होगा? दिस इज द लास्ट टर्म n माइनस r प्लस 1. उसका अगर लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म हम निकालें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म फॉर n माइनस r प्लस 1? वहाँ में क्या होगा? 1 रिड्यूस होगा. दैट मीन्स ये क्या है? n माइनस r प्लस 1 है, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा 1. देन यू गेट व्हाट? n माइनस r. अंडरस्टूड? क्लियर? Because from n, by reducing 1 we get n minus 1. How to get n minus 2? By reducing 1 from n minus 1. n minus 1 minus 1. तो n minus r plus 1 का नेक्स्ट नंबर अगर हमें चाहिए, नेक्स्ट कोई नंबर नेचुरल नंबर हो, अगर सपोज हो तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो ये नेचुरल नंबर क्या होगा? n minus r plus 1 minus 1. फिर क्या होगा? 1 माइनस करना पड़ेगा. सो हियर यू सी व्हाट वी विल डू. n into n minus 1, n minus 2, n minus r plus 1. उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n माइनस r होगा कि नहीं? उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n माइनस r माइनस 1 होगा. डॉट 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 डॉट. फाइनली
फाइनली क्या होगा, रिड्यूस होते 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 सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इज 3 2 1, लास्ट नंबर अप टू नेक्स्ट लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा. अंडरस्टूड. सो आई हैव रिटन समथिंग एक्स्ट्रा. ओरिजिनली दिस इज द आवर एक्सप्रेशन, ये क्या था, हमारा एक्सप्रेशन था. उसके साथ ये नया क्या है, नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा. वट एवर द एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाइड, वो एक्स्ट्रा को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. सो इट विल बी व्हाट, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 डॉट 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 3 2 1. ठीक है. अभी देखो आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैलेंस हो जाएगी. ठीक है. नाउ यू सी इफ़ यू स्टार्ट विथ 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर, देन सेकेंड, देन थर्ड, एंड डॉट 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 डॉट, एंड फाइनली व्हाट, n. So numerator can be written as 1 into 2 into 3 into dot dot dot, finally what, n. Okay, it means what, product of what, first n natural number. Numerator is the product of first n natural number. Numerator क्या है ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है, and which equal to what, factorial n. Okay, which is equal to what, factorial n. So numerator can be written as what, factorial n. And what will be denominator? Denominator में देखो क्या है, प्रोडक्ट 1 से शुरू, 1 इंटू 2 इंटू, ओके मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट, फाइनली कितना है, n माइनस आर. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ n माइनस आर नेचुरल नंबर्स, n माइनस आर नेचुरल नंबर्स. तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस आर. अंडरस्टूड, फैक्टोरियल n माइनस आर. So this is finally a short formula. Okay, so we are going to use this in questions. Okay, npr is equal to what, factorial n divided by, कैसे पढ़ेंगे, npr is equal to what, factorial n divided by what, factorial n minus r. Suppose you are going to find 5p2. You are going to find 5p2. 5p2 what, factorial 5 by factorial 5 minus 2 means what, factorial 3. ओके, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, नीचे वाला हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 मीन्स व्हाट, 5 इंटू 4 एंड देन व्हाट यू कैन राइट इनटू व्हाट, फैक्टोरियल 3. लिख सकता हो कि नहीं, पहले 5 बाहर कर दिया तो फैक्टोरियल 4 हो गया, फिर 4 बाहर कर दिया तो अंदर क्या हो, फैक्टोरियल 3 होगा, नीचे क्या है, फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 कैंसल, अल्टीमेटली आंसर इज व्हाट, 20. ठीक है. इन दिस वे वी कैन फाइंड फाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजल्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिराइवेशन. ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है. दैट इज डिराइवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. जो फॉर्मूला हाउ इट कम्स, उसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ आपके सिलेबस से क्या है, हटाया गया है, सिलेबस में नहीं है. ये जो केस द प्रूफ विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इट बिकॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सच दैट व्हाट इज एनपीआर. अगर मैं लिख दूँ एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी. सो हाउ इट्स कम बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीड्यूर. ओके, लेकिन एग्जाम में ये जो डिराइवेशन है, इफ़ क्वेश्चन आएगा जे प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. ये डिराइवेशन क्या है, डिलीट कर दिया है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में होगा, ये है. तो आपको फार्मूला को जानना ज़रूरी है, लेकिन फार्मूला हाउ दिस फार्मूला कम्स, ये कैसे डिराइवेशन को ज़रूरी नहीं है. ये मैं बोर्ड की लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, असम हायर सेकेंडरी काउंसिल. बाकी बोर्ड लेवल के लिए क्या है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, डिराइवेशन आ सकता है. ठीक है. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर डिराइवेशन. Now I am going to solve few questions related to this particular concept whatever I have discussed in your exercise 7.2 and 7.3. Okay, this is the first question. You have to find x if 1 by factorial 8 plus 1 by factorial 9 is equal to what, x by factorial 10. Okay, this is given. Okay, this an equation is given. From this equation you have to find the value of x. Given what, 1 by factorial 8 plus 1 by factorial 9 equal to x by factorial 10. ओके, सो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे छोटा जो है, दिस इज़ फैक्टोरियल 8, दिस इज फैक्टोरियल 9, दिस इज फैक्टोरियल 10, सबसे जो छोटा है उसको फिक्स करेंगे और बाकी तीनों को क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे.
So 1 by factorial 8 will remain same. Factorial 9 can be written as 9 into factorial 8 लिख सकते हो, ठीक है। 9 बाहर करेगा तो अंदर फैक्टोरियल 8 होगा। एंड इसमें क्या होगा, फर्स्ट 10 बाहर करेंगे, इसके बाद 9 रहेगा, फिर 9 बाहर करेंगे तो अंदर क्या होगा, फैक्टोरियल 8 रहेगा, ठीक है। नाउ सी फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल 8 है। उस लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टोरियल 8 आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। इसमें 1 रहेगा, इसमें 1 बाई 9 होगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा, x बाई 90 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है। अभी ये 1 फैक्टोरियल 8 1 फैक्टोरियल 8 क्या होगा, कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद इसमें क्या होगा, 10 बाई 9 इक्वल टू x बाई 90, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गया, 10 होगा, एंड फाइनली x इज इक्वल टू व्हाट, 100। ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। Another equation, another question I want to say, I want to take. Find the value of n you have to find the value of n. Condition is given np4 divided by n minus 1 p4 equal to 5 by 3. What is n? N is greater than what, 4. This is the question you are going to solve. Okay. See the question. First you expand so given relation is what, start of the given relation. So you can write, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 इंटू np4 इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू n माइनस 1 p4, ठीक है। तो हमें एम्पियर का फॉर्मूला यूज़ करें, np4, यस इस 4, ओके। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, बाय फॉर्मूला एम्पियर क्या था, फॉर्मूला एम्पियर इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, फैक्टोरियल n एंड दिस कैन बी फैक्टोरियल n माइनस 4, एंड इस साइड में क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इस n के जगह में क्या है, n माइनस 1 है, एंड n माइनस r क्या होगा, n माइनस 1 माइनस 4, तो क्या होगा, n माइनस 5। समझ में आ रहा है। अभी देखो n माइनस 4 और n माइनस 5 में कौन सा बड़ा है, ये क्या है, n माइनस 4 है, ये n माइनस 5 है। n इज़ ग्रेटर देन 4, क्यों n इज़ ग्रेटर देन 4, अगर n का वैल्यू लेस देन 4 हो जाए, सपोज 3 हो जाए, 3 माइनस 4 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी, एंड नेगेटिव होने के बाद क्या होगा, आप ये जो n का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो 3p4 डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने जो फार्मूला दिया था एम्पियर में क्या होता है, 0 लेस देन r लेस देन इक्वल देन व्हाट, n, ये r n से बड़ा नहीं हो सकता। सो 4 कैन नॉट ग्रेटर देन n, दैट्स वाई n इज़ ग्रेटर देन 4 गिवन, ठीक है। तो n माइनस 4 और n माइनस 5 में बड़ा है n माइनस 4, बिकॉज इफ़ इट इज़ सपोज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, 4 होगा, और इट इज़ 8 माइनस 5 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, 3 होगा। तो दैट मीन्स व्हाट हैपन, n माइनस 4 इज ग्रेटर देन दिस। तो आप क्या करेंगे, सिमिलरली n फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल, दोनों में कौन सा बड़ा है, बड़ा है n। सो आप एक चीज़ याद रखना कि जो बड़ा होगा फैक्टोरियल के, उसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, उसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो n बाहर ले आएंगे तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा कि नहीं। और नीचे भी इसको एक्सपांड करेंगे, n माइनस 4 बाहर ले आएंगे तो अंदर में क्या होगा, n माइनस 4 माइनस 1 होगा, दैट मीन्स n माइनस 5 होगा फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है। एंड विच इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है। हमें फैक्टोरियल को ख़त्म करना है, फैक्टोरियल ख़त्म करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दिस वन
cancel with this one and this one cancel with this one. Okay, understood. These are all non-zero quantity. factorial का रिजल्ट क्या होता है, नॉन जीरो आती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कैंसिल कर सकता हूँ. सो 3n by n minus 4 इक्वल टू व्हाट 5 हो गया. एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 3n इक्वल टू व्हाट 5n माइनस 20. तो फाइनली क्या आंसर आ रहा है, योर आंसर विल बी व्हाट ट्वाइस n इक्वल टू 10 implies n इक्वल टू व्हाट 10 to n इक्वल टू व्हाट 5. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो दोनों फैक्टोरियल के बीच रिलेशन बनाना होगा, कौन सा बड़ा है, बड़ा वाला को आप ऑलवेज व्हाट एक्सपांड करेंगे, छोटे वाला जो है दैट इज स्मॉलर वन, जो स्मॉलर वन होगा उसको फिक्स रखेंगे. ठीक है, ये दोनों में क्या है, दोनों का एक रिलेशन होगा, और ये n-4 बाहर करेंगे तो ये मिल रहा है, तो उसको एक्सपांड करेंगे. इसको n को बाहर करेंगे तो n-1 मिल रहा है, तो उसको एक्सपांड करेंगे. इसको एक्सपांड करके हमें फ़ायदा नहीं है. n-1 बाहर करो तो n-2 आएगा, तो n-2 तो कोई भी इस पर्टिकुलर टर्म में नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपांड इट, उसको एक्सपांड नहीं करेंगे. सो आई हैव डिस्कस दिस 2 क्वेश्चंस. ओके, so this type of questions are in your textbook in your exercise 7.2 and 7.3. So there are a few questions in your textbooks are there, you can try, then you can do it. Okay, तो आज के लिए इतना ही है. काफ़ी कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है. ये सारे कंसेप्ट को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक में जाइए, अंडरस्टैंड कीजिए, और इफ़ यू डू दैट देन इन फर्दर क्लासेस you will understand better. Okay, with this I conclude here. Thank you very much and all the best. Bye bye. Okay.